Hey, when do we use such kind of raincoat? Yes, student. हम यह रेनकोट कब यूज करते हैं? Yes. Comment your answer. Students, yes, you are guessing correctly. Correct. आपका आंसर, आपका जवाब करेक्ट है. हम यह रेनकोट रेनी सीजन में यूज करते हैं. Yes, student. Now tell me, हम यह अम्ब्रेला कब यूज करते हैं? Yes, you can tell your answer in the comment section. Yes, student. हम यह अम्ब्रेला रेनी सीजन में यूज करते हैं. As well as हम यह अम्ब्रेला समर सीजन में भी धूप से बचने के लिए यूज करते हैं. Is it correct? Yes. Hey student, अब मुझे बताइए हम इस तरह की उलन की टोपी और हाथ मोजे और स्वेटर कब पहनते हैं? Yes. Comment your answer in the comment section. Yes student. Yes, your answer is correct. हम यह ठंडी के दिनों में यानी कि विंटर सीजन में यूज करते हैं, है ना? करेक्ट? यस. यस स्टूडेंट, आपको पता ही चला होगा कि टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. यस स्टूडेंट, तो मुझे बताइए कि आज जो मैंने आपको एक्टिविटीज दिखाई है वह रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन कब आता है और कैसे आता है. यस स्टूडेंट, ये कैसे आते हैं? यस, आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर टाइप करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, रेनी सीजन, विंटर सीजन, उसके बाद समर सीजन, है ना? यह मेन सीजन्स है. इंडिया में यह मेन सीजन्स है. यस स्टूडेंट, तो यह है मेन ऋतु या फिर हम उसे सीजन्स कहेंगे. यस, तो सीजन यानी कि क्या स्टूडेंट? यस, बताइए. सीजन यानी कि अगर एक वेदर, वेदर यानी कि क्या स्टूडेंट? अगर समझो सुबह बहुत हमें ठंडी लग रही है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्म हो रहा है, फिर आफ्टरनून में थोड़ी सी बारिश हुई है, फिर इन द इवनिंग अगेन थोड़ा सा कोल्डनेस है ना? तो यह एक दिन में जो एनवायरमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसे हम वेदर कहते हैं. ठीक है, तो यह वेदर जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत कम वक्त के लिए होता है. लेकिन अगर यही वेदर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहेगा, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो क्लाइमेट जो होता है वो ज्यादा दिनों के लिए, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है. तो फॉर एग्जांपल सीजन्स जो होते हैं ज्यादा महीनों के लिए, ज्यादा वक्त के लिए होता है. ठीक है, वेदर तो पल भर में चेंज हो सकता है, पल भर में बारिश, पल भर में धूप रह सकती है. लेकिन क्लाइमेट यानी कि सीजन जो होता है एक ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, पर्टिकुलर एरिया में रहता है. जैसे कि इंडिया में 4 मंथ के लिए बारिश होती है, 4 मंथ के लिए ठंडी होती है और 4 मंथ के लिए धूप होती है. ठीक है स्टूडेंट, तो यह जो सीजन्स है उसमें जो बदलाव है कि जैसे कि रेन के बाद विंटर यानी कि ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है, तो ये जो चेंजेस है उसके बारे में हमें आज सीखना है. स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड ऑफ 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, दैट इज हाउ सीजन्स occur part 1. Yes student, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी 8th स्टैंडर्ड, हाउ सीजन्स occur part 1. Students, are you ready? Very good. So without wasting time, let's get started with the lesson. So let's start with the first lesson. स्टूडेंट्स, सीजन्स किस तरीके से ऑकर होते हैं या आते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत है. जैसे कि हमने 5th स्टैंडर्ड में मोशंस ऑफ द अर्थ, इस लेसन में हमने पढ़ा है कि अर्थ कैसे रोटेट होती है एज वेल एज रिवॉल्व होती है और उसके बदौलत डे एंड नाइट होते हैं. ठीक है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. ओके, और उसके साथ साथ हमने 6th स्टैंडर्ड में वेदर एंड क्लाइमेट यह लेसन पढ़ा है, उसमें हमने क्लाइमेट के बारे में यानी कि सीजन्स के बारे में जाना है. तो यह बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम यह दिन ब दिन एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें ये पता होता ही है. ठीक है, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है वह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भौगोलिक रीजन क्या है वह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो स्टूडेंट, सीजन्स किस तरीके से आते हैं, हाउ सीजन्स अकर, यह देखने के पहले मैं कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए. देखो यहां पे, सी स्टूडेंट, कीप पेशेंस एंड ट्राई टू वॉच इट एंड लर्न इट. सी नाउ,
सी स्टूडेंट, अज्यूम दैट इट इज अर्थ। आपको ग्रहित धरना है कि यह क्या है, अर्थ है, ग्लोब है। ठीक है स्टूडेंट, और हमें सबको पता है कि अर्थ जो है वह रोटेट करती है, इट स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ। यह अर्थ जो है अपने आप रोटेट होती है, स्पिन होती है। यह स्पिन होती है कहां से, इट रोटेट्स around its own axis. Yes student, so what is axis? See, it is one point from, for example this is the point, और यह एक पॉइंट है जो अर्थ के मिडल में से जाता है ना। दिस एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन ओनली, okay, it is an imaginary line around this line, around this axis the earth rotates. Okay student, and you might have known that यह जो अर्थ है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होती है, ओके, स्पिन होती है, रोटेट होती है। ठीक है, सो कभी भी देखो लेफ्ट साइड जो होता है, यह लेफ्ट साइड इसे हम वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। सो दिस साइड इज ऑफ वेस्ट एंड जो राइट साइड होता है यह होता है ईस्ट। सो दिस इज द ईस्ट। तो अपनी जो पृथ्वी है वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर मूव होती है, रोटेट होती है। ठीक है स्टूडेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू नाउ, दिस मच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अर्थ जो रोटेट होती है अपने एक्सिस पे। ठीक है, एंड सी स्टूडेंट, नाउ see student, for example this is sun, assume that this is sun. See student, now the sun rays falls on the earth in this way, okay, तो इस तरीके से सन रेज फॉल्स ऑन द अर्थ के ऊपर ये सन रेज पड़ते हैं। और जो ये इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है, दिस इज द इल्यूमिनेटेड पार्ट, जहां पे अर्थ सन रेज रिसीव करती है। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, व्हाट डू वी कॉल द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज डे। Okay, illuminated part of the earth is called as a day, and at the same time this part of the earth doesn't receive the sun rays. This part of the earth doesn't receive sun rays. Okay, so this part, what do we call it? इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बताओ। Yes, you can type your answer in the comment section. इस पार्ट को क्या कहेंगे हम? Yes, यहाँ पे लाइट आती है इसलिए हमने इसे डे कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट आती नहीं है, इससे इस जगह पे लाइट, दिस पार्ट इज नॉट इल्यूमिनेटेड वेयर द सन रेज डू नॉट रिसीव बाय द अर्थ, सो इसे हम नाइट कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी कॉल इट एज नाइट। तो इल्यूमिनेटेड जो पार्ट है इसे हम डे कहेंगे, और जो इल्यूमिनेटेड पार्ट नहीं है, जहां पे सन रेज आते नहीं है, उसे हम नाइट कहेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अंडरस्टूड दिस मच? वेरी गुड। बट स्टूडेंट, अगर ये जो एक्सिस है स्ट्रेट है, ओके, तो अगर इस तरीके से हम कहेंगे तो वहां पे 12 आवर्स का डे रहेगा और 12 आवर्स का नाइट रहेगा। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट कंडीशन, यह सही बात नहीं है, क्योंकि द अर्थ इज टिल्टेड इन 23.5 डिग्री। ओके, जो अर्थ है ये स्ट्रेट नहीं है, तो थोड़ी सी झुकी हुई है। तो किस तरीके से झुकी हुई है, कितने एंगल में झुकी हुई है? तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, यह 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यस, इस तरीके से वह झुकी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, हाउ मच इट इज टिल्टेड? 23.5 डिग्री। ओके, समवेयर यू कैन सी 23.4 डिग्री आल्सो, लेकिन 23.5 डिग्री यह टिल्ट हुई है, झुकी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड? और आपको पता है जो ये अर्थ है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 2 पार्ट्स में, और जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह इस तरीके से डिवाइड हुई है, ठीक है, and this line is called as equator, इसे हम इक्वेटर। दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, जो कि 2 भागों में, 2 हिस्सों में अर्थ को डिवाइड करती है। ठीक है, जो अपर पार्ट है, द अपर पार्ट, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट जो है, दिस वन है ना, यह जो पार्ट है, इस पार्ट को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या? नॉर्थ हेमिस्फीयर। इट इज अ स्फीयर and this is the half sphere, so hemisphere. okay, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? तो इस जगह, इस तरीके से अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है। कितने डिग्री में? 23.5 डिग्री।
में एक्सिस में वो झुकी हुई है। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट होती है, ठीक है स्टूडेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, seasons occur. How does it occur? With the next example I will try to explain it to you. Okay students, have you understood this much? Very good students. और एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, it is one of the important things that just now I have told you, when the earth rotates, अर्थ जब खुद के एक्सिस पे घूमती है ना, अपने आप घूमती है, तो यह एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेती है। हाउ मच? 24 आवर्स। हमने 5th स्टैंडर्ड में मोशंस ऑफ द अर्थ में यह सीखा है कि 24 घंटे अर्थ लेती है वह एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। जब अर्थ खुद के एक्सिस पे घूमती है, ओके, व्हेन द अर्थ स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है स्टूडेंट। रोटेशन किसे कहते हैं? जब अर्थ, फॉर एग्जांपल इफ आई रोटेट माई सेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज अ रोटेशन, okay, this is called as rotation because I am spinning around myself. Okay, when the earth spins around itself, that spinning is called as rotation. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? yes, तो देखो आगे बढ़ते हैं with the further explanation. देखिए स्टूडेंट, just now I have told you कि अर्थ जो होती है वो खुद रोटेट होती है। now see, for example, this is sun student, okay, yes student. now see student, here this is sun and this is earth. You know that earth is tilted, okay, how much you know? yes, earth is tilted in 23.5 degree, and this is the, what we can say, it is equator, this is equator, okay, this is equator, and equator divides the earth into two equal parts. This is west side and this is the east side, okay, so earth rotates from west to east side, okay students. And see now, understood, and it takes 24 hours to rotate around itself. now see student, here just now I have told you that the sun rays falls on the earth like this, okay student, understood? now see, the sun rays are falling on the earth, okay, and the earth is rotating around itself. when the earth rotates around itself, some part of the earth is facing towards the sun, okay, that part is called as day. This part is called as what? Day. And the part which is not facing towards the sun is called as night. So this is night, okay. now see student, this is the northern hemisphere, I have told you already, and this is the southern hemisphere, okay. northern hemisphere and southern hemisphere. now you can see that this is the equator, so this is the equator, and sorry, the middle line, that is axis we can say, okay. now see student, this much part of the equator is away from the sun, it is away from the sun, okay. And see student, this part means this part is facing and closer to the sun, okay, it is, this part is facing and close to the sun in comparison to this northern part, okay student. so this part, in this part the sun rays are going directly, and so here this part of the equator, that is the southern hemisphere, experiences what? Summer season, because here the temperature is hot. This part, southern part, is facing or closer to the sun, so this area, this region, that is the southern hemisphere, experiences what? Summer. At the same time, this northern part is away from the sun, somewhat away from the sun, so, and the sun rays are falling cross, and because of that, this region experiences what? This experiences winter. What does it experience? Winter, okay students. this region is away from the sun, so here this part experiences winter. This region is closer to the sun,
So directly sun rays falls on this region, that is the southern hemisphere. So this region experiences summer. Okay, student, have you understood now? Yes, very good. Now, student, you know that just now I have told you the sun rotates around itself from west to east continuously 24 hours. Okay, when it rotates around itself, it revolves around the sun also. Okay, it revolves around the sun also, and it doesn't revolve in a circular way. It revolves in a ecliptic way. Okay, ecliptic means what, student? It is not completely circle, but it is a, what we can say, cylindrical, we can say. For example, the sun revolves like this. Okay, so it is not a circle, but it is an oval. Okay, oval. Understood? So in this path, it rotates itself and revolve itself. So when it rotates around itself, that is called as rotation, and when it revolves or spins around the sun, that is called as revolution. Okay, rotation and revolution. Understood, student? Yes, very good. Dear students, one more important thing is here, that in the northern hemisphere, this is the part of day. So this part experiences, okay, the shorter day. Okay, the duration of the day will be short here. Okay, short means the day will be short here. Okay, and student, this part of the northern hemisphere, okay, will experience longer nights. Okay, longer nights. Longer nights. Understood, student? So this is also very important. यह भी बहुत उपयुक्त और महत्वपूर्ण है. Now see, student, here. Yes, student, just now I have told you, अभी मैंने आपको बताया कि rotates around itself as well as revolves around the sun. Okay, and the earth, when rotates or the earth spins around the sun in the orbital path, this is called as the orbital path of the earth, on which it rotates continuously, spins continuously. Okay, and moves around the sun also. It rotates around itself as well as it rotates around the sun also. That is called as revolution. When it is revolves and completes the 3 months, earth, here the earth will experience, what does it experience? 12 hours of day and 12 hours of night. Okay, okay, student, जब यहाँ पे अर्थ 3 मंथ्स कंप्लीट करेगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे जो अर्थ है, इस जगह पे अर्थ क्या एक्सपीरियंस करेगी? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात यहाँ पे वो एक्सपीरियंस करेगी. ओके स्टूडेंट, हैव अंडरस्टूड? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, student, now when the earth completes the half rotation and comes here, for example, see now, students, see here, when it rotates and spins, okay, around the sun and comes here, okay, it is tilted. Okay, students, yes, so the axis will not change. Okay, the axis will not change, it will be remain the same one. Okay, so it is tilted in 23.5 degree, we know that. Okay, students, now we have to see, and this is the equator, we know this is the equator, this is equator. Okay, and it moves from west to east, so it moves from this side to this. Okay, so west to east it rotates. Now see, student, the sun rays, which part is receiving the sun rays? Now let's try to understand. Now see, the sun rays falls here, this is the equator, you know. Okay, students, now we can understand. See, student, which part is receiving more sun rays here? This is north hemisphere, we know, and this is the southern hemisphere, we know. Okay, so and this is the equator. So this part, and this is the straight line. Okay, and so this part is receiving more sun rays. Okay, so this part receives more sun rays. Okay, student, so here as well as this northern hemisphere, this part is close to the sun. Okay, this part is close to the sun. Okay, and when it is close to the sun, we have seen this part is close, so here this part experiences summer. So now this part experiences summer because it is closer to the sun. And now, student, this part, see this one,
And this part, what student? This part is away from the sun. This is the away from sun. Okay, so it experiences this region experiences winter. Okay, so this part experiences winter, this part which is closer to the sun, so this experiences summer. Okay, now see student here, which day or the night is shorter or longer here now. So here what we can say, the days are longer. As usual, this part faces, okay, to the sun, and the sun rays are receiving here on this part of the earth. So here days are longer. Days are longer. Okay, and this part of the earth, this part of the earth of the northern hemisphere receives less light, so here the nights are shorter. Nights are shorter. Understood? Day is longer, nights are shorter. Understood student, this much? Okay, so here the summer, vice versa we can say. So this period is of June month. Okay student, don't forget. Okay, June, when it completes 3 months, it will come here. For example, after 3 months of rotation or spinning, it will come here, and here what we will experience student? Here we will experience what? 12 hours day and 12 hours night. Okay student, now when it will complete 6 months, it will come here. Okay, so here this is the duration or the month of December. After 6 months of the rotation, June, okay, July, August, September, October, November and December. Okay, then December, from December, January, February, March, April, May and June. Understood student? So in this way, the earth rotates around itself as well as around the sun. Okay, when it rotates around itself, that is called as rotation of the earth, and when it spins around the sun is called as revolution of the. So student, in this video we have studied that earth rotates around itself, that is called as rotation of the earth. It means that जब earth धरती अपने आप अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं. And when the earth rotates around itself as well as it rotates around the sun in the orbital path, that is called as revolution of the earth. Okay student, as well as when the earth rotates in its orbital path, that is called as orbital motion. The term is used here, orbital motion. And here when the earth rotates around itself, it takes 24 hours to complete one rotation. Okay, and when the earth spins around the sun, okay, it takes 365 days, approximately say 365 days to complete one revolution. Okay student, and here we know that earth is tilted, okay, somewhat tilted in 23.5 degree, and because of this tilt, the seasons occur on the earth. Okay students, and one more important thing I would like to tell you, because of the orbital motion, because of the axial motion of the earth, day and night occur on the earth. Okay, as well as because of the tilt of the earth and the motion of the earth, seasons occur on the earth. And I have told you that why the days are longer on the earth as well as nights are shorter on the earth. Means the duration of the earth, whether the night is short, whether the night is long, whether the day is long or shorter, what is the reason behind that? That also I have explained it here students. So almost all the questions I have covered here, no doubt should be there. If you have any doubt, you can ask the question in the comment section without any hesitation student. So here, this is the first part of the chapter, that is how seasons occur, part first. In the next video, we are going to understand the activities which are given in the lesson, that is how seasons occur, part first. Okay students, with this explanation you can or you will able to answer each question which is given
in the chapter first, that is how season occurs. Okay, students. So if you have understood this, if you have liked this, then do not forget to subscribe my channel, share it to your friends, and do not forget to comment below the video. In the next video, we are going to see the activities which are given in the lesson number 1, that is how seasons occur part first. Till then, stay tuned. Thank you. Be studious, be thoughtful, and be connected.